make thandai at home. So for this, let's take a look at the ingredients that would be required. The thandai paste बनाने के लिए generally we require a mix of dry fruits and a lot of herbs. So almonds, cashews, poppy seeds, melon seeds, fennel seeds, cardamom यानी इलायची, black peppercorns यानी काली मिर्च, sugar, दूध, रोज पेटल्स ले सकते हैं या फिर रोज वाटर इफ यू हैव, और केसर यानी कि सैफरन स्ट्रैंड्स. सो इन सारे इंग्रेडिएंट्स से अब हम बनाएंगे ठंडाई का मिक्सचर. सो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, ये जितने भी हमारे नट्स हैं इनको हमें गर्म पानी में भिगोना है. तो मैंने क्या किया है कि गर्म पानी कर लिया है, उसमें ये सारे नट्स, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे इसको एक एक करके इसमें मैंने डाल दिया है. जनरली आप क्या कर सकते हो, इसको 3-4 घंटे के लिए आप भिगो के रख सकते हो. दैट मीन्स यू कैन सोक दिस इन वाटर, बट इफ यू वांट टू बी अ लिटिल क्विक एंड मेक इट देन एंड देयर, देन you can simply boil all these ingredients on gas flame. And in the next step, we simply need to blanch. That means इन सारी चीजों को हमें छाना है, and then we simply need to blend. And we need to make a thick thandai paste. So to make the paste a little creamy, what we can do is we can add some milk, or if you want you can add water as well, but milk is what I would recommend. So now that the thandai paste is ready, we just need to make our drink. So इसके लिए फ्रिज में से ठंडा ठंडा दूध लेंगे तो उसका मज़ा जो है वो और ही आएगा. And if you want you can add ice cubes as well. So simply add the thandai paste and add the cold chilled milk and then simply blend. So you can blend this mixture in a blending jar as well, but यहाँ पर मैंने ट्रेडिशनल तरीके से मैंने एक लोटे में इसको मैं हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ, जिसका स्वाद जो है वो नेक्स्ट लेवल ही होता है. So now what? You just need to pour yourself a glass of thandai, garnish it with your favorite ingredients. I've used some rose petals and saffron. You can also add some more dry fruits to it and serve it to your guests on Holi or in summers also. This thandai drink is extremely beneficial and has a lot of health benefits since we're using seeds, nuts, और गर्मियों के मौसम में इसे कंज्यूम करने से हमारा शरीर जो है वो ठंडा रहता है. So thandai keeps us ठंडा यानी कि cool. So this is how you can make this thandai with very easy and simple steps at home. ठंडाई का बाहर से पेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. Since they add a lot of sugar and oil, you can add sugar, honey, whatever you want to, and make this chilling drink for Holi and thereafter as well. While for more such content, simply log into trends9.com.